मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तवील अरसे से जारी संगीन तनाज़ा और इंसानी अलमिया है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के 58वें बाकायदा इजलास के दौरान परवेज़ अहमद शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा, United Villages appreciates the High Commissioner's efforts in highlighting human rights issues that are closest to our hearts. The statement serves as a beacon of hope amidst the prevailing human rights violations committed by various countries worldwide. Mr. President, it is appalling and regrettable that human rights, which should be the cornerstone of liberal democracies, have been relegated to the background. Populist politics, jingoism, and politics of exclusion and marginalization are further eroding the space for human rights. इंसानी हुकूक काउंसिल के बाकायदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने शुरका की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तरफ मबसूल करवाई। Kashmir is also a victim of neglect and underreporting when it comes to human rights violations. The people of Kashmir deserve to be heard, listened, consoled, healed, and sympathized with. A human rights violation anywhere is a human rights violation everywhere. We must create a space for Kashmiris to share their stories of agony, pain, and sorrows. We must be empathetic towards the mothers who have lost their sons, shoulder the burden of an old man who has lost his younger son, and support the woman who lives in unending weight and suffocation, unable to express herself due to fear and the absence of human rights. We have promised the world we will ensure human rights. Let us not oppress and dishearten the Kashmiri people. They wait for us to provide a remedy. इसी मौके पर जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के 58वें इजलास से खिताब करते हुए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के हालिया बयान को सराहा, लेकिन साथ ही साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर में काले कवानीन के तहत बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। Welcomes the High Commissioner's report and shares the concerns regarding the restrictive laws, harassment and arbitrary detention of journalists and human rights defenders in Indian-occupied Kashmir. However, we are dismayed that the report has not adequately addressed the alarming human rights situation in the region, which continues to deteriorate. गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में किए जाने वाले बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करते हुए हालिया दिनों में मकबूजा रियासत में पेश आने वाले 2 अलमनाक वाक़यात की तरफ हाजिरीन की तवज्जो मबसूल करवाई। I wish to draw your attention to recent tragic incidents in Indian-occupied Jammu and Kashmir. On February 6th, a 25-year-old resident Makandin from Kathua tragically took his own life following brutal torture by police and paramilitary forces. In a heartbreaking video recorded prior to his death, he detailed the inhumane treatment he endured and the coercion to accept false charges. On the same day, Wasim Majid Mir, a 35-year-old truck driver from Goripura, Bumai, was fatally shot by Indian forces while traveling from Srinagar to Baramulla. These incidents exemplify the ongoing custodial torture, arbitrary detentions, confiscation of properties, and severe restrictions on religious freedoms faced by the people in Indian-occupied Kashmir. We urge this Council to take immediate actions to address these grave human rights violations and ensure accountability for those responsible. We should listen to Kashmiri voices rather than listening to political rhetoric of India. खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर के तनाज़े को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए।